Hello friends, welcome to GS Core. Myself Viraj, and today it's really a good fortune of us that one of the most well-read faculties of history is with us, and we will be discussing with Piyush Yadav sir how to deal with the subject of art and culture and history, how to deal with the subjects of art and culture and history from the point of view of prelims. Welcome sir. Thank you, Viraj. Thank you very much. It is always matlab, intellectually stimulating experience sir, whenever I have a conversation with you, and I hope students find it to be very helpful from the point of view of prelims, sir. So first of all, I would like to thank you, Viraj and GS Core both, right, for giving me this platform to discuss some of the very important and the crucial issues at Right, that sir. moment in this particular juncture, because at least those who have written the exam before, for them it is quite easy to take Right, care, sir. like and then handle this pressure and all. Right. But when it comes to the new students, they really require this kind of guidance and all. Yes, sir. So for that, Yes, it is really needed. So yes. thank you once again for giving me this platform and the It's opportunity to our talk to pleasure. the students. Thank you. So, sir, the first question on the behalf of students is history in that way is quite diverse. Matlab, we have ancient India, medieval India, modern India, and then we have, we can say, a separate part in itself of art and culture. So, taking into consideration ROI, return on investments, what should be my priority as an aspirant, sir? Okay, I think the first question itself is really a tricky one. When it comes to attempting the pre, Hmm. undoubtedly history is one of the most challenging Hmm. areas. And do you know why it becomes challenging? Because as far as other subjects are there, so basically there are certain themes on what the questions are being framed. Right, sir. Unfortunately, that is not applicable in history Right. because there is no certain hypothesis or Hmm. certain concepts on what you can, Hmm. attempt of solving the questions. Right, sir. Here, ultimately, the facts are there. Hmm. Either you know or you Hmm. do not know. Hmm. Right? That is the basic funda which works. Right, sir. What I believe that since the number of questions are very fluctuating, Ha. specifically when it comes to modern India and ancient India, Hmm. and to a certain extent art and culture also. So I believe that you should give preference first to modern India, Okay. and the second priority should be ancient India. Okay. Now there is a logic behind it Okay, because sir. of what I suggest. Normally, what happens, there is a trend which is being followed Hmm. among most of the students, those who have been preparing for UPSC, Hmm. that they give more preference to modern. Okay. Since it is a competitive examination, Right. you don't need to perform like in a best. Right. You need to perform better than your Better than the others. competitors. Right, sir. So since they are giving more weightage to the modern India, Hmm. they are reading that whole book of Spectrum, Hmm. and then sometimes they are reading couple of books also. Hmm. So since they are giving more preference to modern, you also give more preference to modern. Hmm. That is the best strategy, and the second preference would be given to ancient India. Okay, sir. So one of the most feared areas I will say when it comes to prelims is art and culture. Correct. Now there are few doubts of aspirants with respect to it. First is art and culture के point of view से chronology वाले questions. मतलब कौन सा sculpture पहले बना था? The UPSC has the habit of asking you in Correct. chronology. Correct. So how to deal with them? And second is, sir, what at this stage should I refer to when it comes to art and culture? Okay. What I believe that when it comes to covering ancient India and art and culture, don't treat it as two different subjects. Okay, ठीक That है is a sir. great misconception that now we are reading art and culture, now we are reading ancient India. Right, sir. These two are very much interconnected. Yes. One more thing, like students should always follow Hmm. that when it comes to the division of history syllabus between pre and mains, Hmm. now they emphasize precisely on art and culture question in mains. Ah. When it comes to pre, they are mostly asking the questions which are having a sort of connection with both Right. ancient and art and culture. Right, sir. So that's why I'll suggest that while focusing on ancient India, Hmm. precisely focus more on those topics which are even related to art and culture. Okay. Let's say you cover architecture. Let's say, for the best example, we can take Buddhism and Jainism. Right. Now, Buddhism and Jainism you cover in ancient India. Right, At sir. the same time, every year, minimum one, maximum two questions are being asked from Buddhism and Jainism. So I think you have to focus more on that subject. So Okay. that is why while covering ancient India, so you focus more on those cultures, like those topics related to art and culture. That's the answer of the first question. The second answer would be while attempting the chronological questions, while covering the syllabus of ancient India, slightly focus on the art and culture portion also. Like let's say you have been doing the Mauryan period. So in your mind there should be a sort of picture. आपके दिमाग में वो क्लियरिटी से बहुत क्लियरली होना चाहिए, बहुत क्लियरली चीजें क्लियर होनी साफ होनी चाहिए कि आप जो है वहां पे
उसी समय मौर्यन कल्चर को भी थोड़ा कवर करे, मौर्यन आर्ट को भी कवर करे, राइट तो क्रोनोलॉजी उससे क्लियर हो जाती है कि अच्छा मौर्यन पीरियड में ये सारी चीजें मिल रही है, तो आपके दिमाग में अच्छा होता है कि एक बार आप अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे हैं तो कल्चरल डोमेन पे ये डेवलपमेंट्स हो रही है, यस तो उस तरीके से अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे उसको इंटरलिंक करके तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी आपके राइट लिए। एंड देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड बुक्स एज सच इन नॉट प्रीलिम्स, रियली, है नॉट ना रियली, ऑफ कोर्स नॉट। सर वही सबसे मतलब व्हेन आई स्पीक टू स्टूडेंट्स, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट बट ठीक है बच्चे पूछते हैं, उनका ये होता है कि मतलब ये पर्टिकुलर बुक आर्ट एंड कल्चर के लिए, मतलब आई वुड नॉट नेम एनी बुक या फिर हमारे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक या ऐसा कुछ हो जाएगा, बट सर द थिंग इज दैट ना कि जो स्पेशलाइज्ड बुक्स है आर्ट एंड कल्चर में जो शायद हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चे यूज करते हैं, करेक्ट। वो बच्चे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं प्रीलिम्स में, तो मतलब देयर इज ओवर, दे आर ओवरबर्डनिंग देमसेल्व्स। आई टोटली अग्री विथ यू विराज। होता क्या है कि कई बार आप क्या होता है ना, आप यू डेवलप दिस टेंडेंसी ऑफ चेजिंग द क्वेश्चंस। राइट राइट Once UPSC has asked one question and then you found the answer of that particular question in a यस सर, precise book, and you start believing कि आपको वो किताब पढ़नी चाहिए। हाँ हाँ Look, I'll repeat that particular thing again. It's a competitive बिल्कुल examination. सर You don't बिल्कुल need to correct all the 100 questions. बिल्कुल अगर आप 50 क्वेश्चन भी करेक्ट कर रहे हैं, I think your selection is undoubtedly like you know, राइट it's there. राइट So don't chase each and every question. What you should try that what are the basic stuff that you have read. If any question is coming from that book, you should not commit any mistake. राइट That is the key. हाँ And that is like one of the suggestion I'll tell you very categorically कि आपने NCERTs पढ़ी है, आप ये पूरी पूरी शिद्दत से ये कोशिश करिए कि NCERT से अगर कोई क्वेश्चन आए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन दैट यू कैन लर्न, ठीक है, जो बुक आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से आप रिवाइज कीजिए एंड सी टू इट दैट यू डू नॉट गेट योर क्वेश्चंस रॉन्ग when the content is asked from that particular book. Am I right, sir? 100%. And if you really want to school, let's say you are taking great interest in art and culture, आपको लगता है कि नहीं ये मैं सही कर सकता हूँ, वैसी केस में मैं कहूँगा कि हाँ, couple of pages you can consider. हाँ okay Never ever go for a complete book. So let me give you like more specifically. There's a book on ancient India. It's a very bulky book, and there are certain questions coming from that book. Just to correct those questions, if you have been reading the whole book of like whole that book, in that case I think it is not worthy. it is not a great No, ROI, of course not. If you have identified those couple of pages from where UPSC has been very frequently asking questions, in that case, fine, fair enough. Like you can go those pages, 4-5 pages or 10 pages max to max. But then you should be stick with the original source, the NCERTs and all those basic sources, and you revise them multiple times that you are not committing Right, any sir. mistake. Right, sir. Another thing with respect to history from the point of view of prelims is, sir, एक तबका बच्चों का ये भी है जिनको लगता है कि हिस्ट्री को ही कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं, बिकॉज मतलब माय लास्ट अटेम्प्ट वाज 2016 एंड सब्सटेंशियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू कम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अब नहीं आ रहे, सो व्हाट विल यू एडवाइस टू दो स्टूडेंट्स, और अगर ऐसे बच्चे रहे और आफ्टर सीइंग दिस पॉडकास्ट इफ दे विश टू नाउ have a look at the subject, so what will you suggest them, sir? I always used to say, I'm laughing because of one reason. I always used to say one thing, कि let's say UPSC is introducing one new paper that everybody who is knowing Chinese, they'll be entertained in UPSC, right? Then the question is that whether you'll learn Chinese or not. Of Yes, course, sir. na? You're Yes, not sir. having any option. We have to learn. So don't Right. have this kind of feeling for any particular subject कि I hate this subject, I'm not going to read it. Ultimately, you are not reading that subject to become the master of that. Right. You are reading just to clear this Clear exam, the right? examination, right? And the moment you have been attempting pre, there are like three kind of questions. One, that's a basic common question, right? The second, which is slightly tough, and the third is very tough, Right, right? right, right, right. So what is the बेसिक पैटर्न ऑफ क्लियरिंग द प्री कि जिसमें सारे बच्चे सही हाँ, कर रहे हैं, हाँ, उसमें आपको भी सही बिल्कुल करना है, सर। ठीक है। जिसमें थोड़ा टफ साइड है, उसमें आप कुछ क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करिए। Right, sir. लेट्स से यू आर नॉट लाइकिंग हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, हम्म, फेयर एनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर बच्चा हर सब्जेक्ट पसंद नहीं कर सकता, बिल्कुल सर। ये नॉर्मल ह्यूमन फिनोमेना, ह्यूमन Right, टेंडेंसी है। right. आप उतना पढ़ लीजिए जिससे आप एकदम जो इजी पीजी क्वेश्चन है हाँ। जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, उनको आप करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा, दैट इज अ कंपल्सन, Right. दैट इज नॉट योर चॉइस। सर देन व्हाट टू रीड, मतलब अगर मैं अभी सोचता हूँ कि चलो 40 दिन है, Okay. आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस दैट यूपीएससी इज आस्किंग मी फ्रॉम हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, मेरे कम से कम 4 राइट होने चाहिए। Okay, fine. I think it's very easy. It's not very tough. Though ideally speaking, right now, you do not have the time to read the NCERT Right. material or ठीक anything as such. I'll suggest you that
when it comes to history, specifically ancient and medieval wala part, for that, if you have prepared any notes, your friends have prepared any notes, right? हाँ, Or else you find the compiled material, because this is the era of material only, right? आप गूगल में कुछ भी ढूंढ लो आपको मिलेगा, ठीक है? आप कहीं पे भी ढूंढे कि प्रिसाइज मटेरियल ऑफ एंशिएंट इंडिया, किसी ना किसी का मिलेगा। राइट, जिसका भी मिलता है, बस ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सर, करेक्ट दिया हुआ है। बिल्कुल, आप बिल्कुल उसको पढ़ जाइए। 16-17 पेज, आई ऑलवेज यूज टू से यू डोंट नीड टू रीड मोर देन दैट। 15 से लेकर 20 पेज का कुछ कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट मिले, पढ़ जाइए, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस आपके सही हो एंड जाएंगे। सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स? Look, Viraj, PT is all about remembering the facts that राइट, to correctly, राइट, right? राइट, राइट, And ultimately, जो इंसानी दिमाग है, वो हमेशा सारी चीजें तो रिटेन नहीं कर नहीं सकता। कर सकता सर, और उसमें बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? कंफ्यूजन। एंड इन द एग्जामिनेशन हॉल, सिंस आई आल्सो अपीयर्ड इन द एग्जाम, राइट, आई नो दैट यू आर वेरी लाइक श्योर अबाउट दैट आउटसाइड ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। वहां जाके होता है कि नहीं यार, ये था या ये था। यहाँ पे माइंड मैप्स बड़ा हेल्प करते हैं, बिकॉज द पिक्टोरियल मेमोरी, ठीक है, राइट, यू हैव सीन ए पिक्चर, लाइक बिकॉज माइंड मैप्स आर राइट, लाइक राइट, काइंड ऑफ पिक्चर। बिल्कुल तो सर, वो पिक्चर में ना आपको लोकेशन समझ में आते हैं कि अच्छा राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे ये लिखा हुआ था, तो वो काम कर जाता है कई बार। तो मुझे लगता है इफ यू हैव कंपाइल इट, कंपाइल द माइंड मैप्स, गो फॉर इट। अगर नहीं है आपके पास, तो दिस इज नॉट द दिस इज टाइम नॉट टू द डू टाइम, इट, राइट? बिल्कुल सर, इन दैट केस व्हाटसोएवर लाइक मटेरियल दैट यू हैव प्रिपेयर्ड और द नोट्स यू हैव प्रिपेयर्ड, रिलाई ऑन दैट। ठीक है सर। ओके सर, एक चीज आपने अभी उठाई, इन द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब आई एम ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन अप, इन द एग्जामिनेशन हॉल, from your experience as an aspirant also, Yeah. as a teacher also, what are the mistakes that UPSC aspirants commit in the examination hall and how they can be avoided, sir? Very simple thing. I always used to, again I'll say the same thing. I always used to say one thing. In the examination hall, you just need to, if you have really done the hard work, I'm not talking about those who have just read for 1 month या or सिर्फ 30 फॉर्म days. भर दिया है तो चले Exactly, मैं गए। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। Those who have been preparing dedicatedly for the pre for last 3 to 5 months, of course they have done the hard work. राइट They are सर, honest to them. बिल्कुल सर, They first need to learn how to maintain the pressure level. राइट, That's very important. What happens when you somehow take the exam over you? आप ऐसे क्वेश्चंस में गलती करते हैं जो आप 10 दफा बाहर करेंगे एग्जामिनेशन हॉल से जाके, वो सही करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो बाहर निकल के नहीं कहता है कि मैं ये 5 क्वेश्चन सही कर सकता था। ये 5 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं मेरा, ठीक है? तो आपको लगता है, मेरी पहली सजेशन तो यही होगी कि आप इतना वो रहे, काम रहे, कंपोज रहे कि आप वो गलतियां ना करें। अगर आपने वो गलतियां नहीं की ना, योर चांसेस आर वेरी फेयर टू क्लियर द प्री एग्जामिनेशन। दैट्स द ओनली सजेशन आई विल गिव, right? Because you have studied harder, right? You have like, of course you have given 5 months. In that case, you are not lacking behind, ठीक है? So trust in yourself and go for it. ठीक है। The last question, sir, is can you provide a topic wise micro strategy so that the students are not overwhelmed, sir? Okay, as far as this topic wise, it is almost like, it's very tough to answer this question. Right. But yes, if you'll see the PYQs, because ultimately we are also getting the insight from the Right, PYQs. right. तो मुझे लगता है कि आर्ट एंड कल्चर जैसे एरियाज में कुछ ऐसे चीजें हैं जो बहुत आर्ट एंड कल्चर इन एंशिएंट इंडिया में। पहला मैं कहूंगा आपसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और जो फिलोसफीज है इंडिया के, उसको जैसे सरदर्शना स्कूल, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, एक पार्ट है, इसको थोड़ा फोकस करिए। आप थोड़ा सा उसमें इन डेप्थ जाने की कोशिश Aspirants, करिए। please note this down. It's very important. So please continue. So बुद्धिज्म, जैनिज्म, सरदर्शना स्कूल, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, राइट? ये इनको इनफैक्ट मीन्स में भी आपके काम करेगा। दैट इज वन टॉपिक, ठीक है? लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दिस इज द सेकंड टॉपिक आई विल सजेस्ट यू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मॉडर्न इंडिया है, उसमें थोड़े पर्सनालिटीज को आप अच्छे से देखिए। पर्सनालिटीज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। I think you should focus more on them, because nowhere you find the compilation. Right. So while reading the content, while revising your content, like, try to focus ki acha when it comes to Raja Ram Mohan Rai, certain specific things, yeah, any other Right, person. sir, right, So these are the few suggestions: personality in modern India, and then art and culture, language and Buddhism, Jainism, and other topics related to this, and then language and literature. ठीक है सर। वन मोर क्वेश्चन सर, please, थोड़ा सा please. मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, बट Please go ahead. मैं चाहता हूँ बच्चे ज्यादा से ज्यादा फायदा आपका I उठाएं। really appreciate you. सर, नेक्स्ट 37 38 days 39 days whatever it is now, क्या करे बच्चे और क्या ना करे सर? बिकॉज सर, रोज मतलब प्रिंस सर से भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, बिकॉज एक जो चीज मैं मतलब देखता हूँ और जो बुरा भी लगता है वो है कि एवरी मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड गुड स्टूडेंट्स दिस इज हैपनिंग विद,
this thing is happening with, कि उनका लगता है कि उनका पढ़ के ही नहीं हुआ है, उनका Okay. पढ़ के ही नहीं हुआ है. मतलब आई हैव सीन एवरेज स्टूडेंट सर, दे आर मोर कॉन्फिडेंट, और जो अच्छे बच्चे हैं सर जिनका मेंस का प्रिपरेशन हो चुका है, वो उनको लग रहा है कि पढ़ के ही नहीं हुआ है सर. एंड सर बुरा ये लगता है ना कि प्रीलिम्स की एक गलती की वजह से दे विल मिस अ गुड Yeah, चांस. that is very true. That is very true. I still remember one of the very popular saying for the prelims and mains कि अगर आपने प्री क्लियर कर लिया तो आपने क्या हासिल कर लिया, राइट, और अगर आपने प्री नहीं क्लियर किया तो आपकी दुनिया उजड़ गई. ठीक है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. That is true Right, indeed. sir. That is perfectly true. Look, Viraj, what I believe that, in fact, everybody must agree with me on this point. There is no point where you are feeling that your preparation is completed. Right, sir. That is 100% true. The second thing I'll say, कि in this particular period or whatsoever days are remaining, you focus more on revision, revision, and revision. Whatever the hard work you are supposed to do in last 5 months, you have already done that. 4 or 5 months, it depends, right? Right. Now go for more revision. Why? Because you have to avoid the confusions. And those mistakes, what most of the students commit, you have to somehow avoid that. Right, sir. And I think that is the key of the success. So go for multiple revisions. Right. Don't try to read new things until and unless they come by their own in front of Right. you. You are attempting any question and you found a new fact. Fine, take it. But then by reading book, don't try to get the new content. Right. That is it. So, and sir, with respect to attempts, now in ORN, in Mukherjee Nagar, in other hubs also of UPSC, एक हवा चला है कि 90 तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए, 95 तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए. सर, दिस इज एक्चुअली ना एट द कोर ऑफ द मिसचीफ. अब अच्छे स्टूडेंट्स या फिर मैं और आप भी अगर एग्जाम दे तो आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट 90 और 95 क्वेश्चंस सर. Again, I'll tell you incident. 2010 attempt I was writing. 2010 was that year when UPSC has changed the pattern of the questions altogether. Drastic change. हम उस जमाने में प्रिपेयर करते थे जब एक ऑप्शनल होता था और साथ में जीएस में 150 क्वेश्चंस आते थे. एक पैटर्न बना हुआ था कि अगर आप 80-90 के आसपास जीएस में और अराउंड 80 के आसपास अगर ऑप्शनल में आपने कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाता है. स्टूडेंट्स एट दैट टाइम देयर वाज नो सीसेट, देयर वाज ऑप्शनल इन. या एग्जैक्टली. प्लीज कंटिन्यू. सो आई वेंट टू द एग्जामिनेशन हॉल एंड द पेपर वाज बाउंसर. जीएस पेपर वाज बाउंसर. ओके सर. अभी हमारे पास दो चॉइस थी कि हम ब्लाइंड खेलें कुछ में और ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि हमारे दिमाग में तो 80 वाला फिगर बैठा हुआ था. मुझे एक चीज समझ में आई कि फॉर लास्ट 5 months आई हैव डन द ऑनेस्ट हार्ड वर्क. राइट. So my position must not be worse than the others. Right. They have also done the आपका hard work. पेपर डिफिकल्ट है तो सबका डिफिकल्ट होगा. That was the idea clicked in my mind. And let me tell you honestly, Viraj, I could correct only 50 or 53 questions correctly, and I cleared the prelims. ठीक है. So I think I'll tell you the same thing. There are certain questions you are confident enough, do that. Second label questions, slightly tough, right? There, if you are able to identify this, you are able to remove 2 options. In 2 you have to go for the guesswork, go for that. There are certain questions you are not getting any clue, leave that. This is the criteria. बिल्कुल सर. So never ever try to attempt 90 questions, 100 questions and so on, right? Because what I have noticed that if you're not very expert in making the guess, in that case it is not going to work for you. So that's why follow this criteria. ठीक है. So it has come from the horse's mouth. Attempting everything is not needed. Please be very considerate in it and focus more on conversion. 100%. Right. Yes. So sir, now I will have to let you go, but with a promise. Sir, ये promise मैंने प्रिंस सर से भी लिया था. हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चों को जरूरत है आपकी. Any day. तो आपको मेरे साथ पॉडकास्ट करना ही है. I would love to. I would love to. So invite me on any day, and I'll be here. And really, I also enjoyed a lot because sometimes there are certain basic things what students avoid, what they miss. But then we are having certain tajurba of life and the exam also. So I think you can take the advantage of that. So it was really a great sharing my journey, my information with this. And thank you, Viraj. Sir, my pleasure. So students, sir ने ही बोला है कि you have to exploit them. So for prelims at least, now what you can do is, even after watching this podcast, if you have certain doubts or if there is any question that I have not taken up, so please mention that in the comment section. Sir will answer those questions. I'll definitely. And if you want to get in touch with sir, so those who are in Delhi can come and meet him. You have to contact the administration of GS Core or you can connect with me. और जो लोग दिल्ली से बाहर है, we will make sure कि over telephone or on Google Meet, sir speaks to you.
Anytime. I'm always there for the students, Viraj. Anytime. Thank you so much, sir. So thank you guys. Best of luck. Thank you, sir. Best of luck and thank you very much, Viraj. Thanks.